हम लोगों ने फ़अहज़रू तक किया था लास्ट टाइम, ठीक है? सो बस इट्स जस्ट लिटिल बिट रिमेनिंग, इंशाल्लाह लेट्स पुश दिस टुडे कि हम ये कर लें कंप्लीट. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दोज़ हू बिलीव, inna min azwajikum wa awladikum, certainly from your spouses and from your children, aduwan, they are enemies, right? For you, lakum, fa'ahzaruhum, so beware of them. Okay, beware of them. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. अब ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मीनिंग जो है ना, ताफू और तस्फाहू जो है ना, I personally get mixed up quite a lot. Yeah, but inshallah, let's see if we can find what's going on here. So आपको in नजर आ रहे हैं, then you have something going on. So I'll just hear your thoughts first, what you think this is, and what is the translation, if you remember anything. कुछ याद है meanings इनकी? ताफू क्या होता है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी. दुआ आती है सबको. Pardon, Forgive. forgive. अगर ये forgive है नहीं, तो तग़फ़िरु क्या है? Taghfiru, हाँ अस्तग़फ़िरुल्लाह. जी, तग़फ़िरु is forgive, ताफ़ू is pardon, and Pardon. तस्फ़हु is like overlook. To ये overlook. To overlook, ignore, to overlook. So ignore. वा इन ताफू का क्या मतलब हो गया फिर? Pardon. Pardon. ट्रांसलेशन सिर्फ pardon तो नहीं, वा Pardon इन mean ताफू. कि आप मतलब If you do not make them accountable for it. नहीं, I They, understand that. मैं ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ. वा इन ताफू की ट्रांसलेशन. oh, and okay. if you pardon, If And if you pardon, you Yeah. all pardon. Right? And if you all pardon. The difference between pardon and forgiveness. याद है कुछ किया था हमने क्लास में थोड़ा सा. बिल्कुल. So उसकी Pardon सिंपल is एग्जांपल. हाँ जी, erase. जी. The pardon is to erase. कि हुआ Totally ही था erase. कभी ना. Totally erase. और forgiveness. Lovingly forgiving. बिल्कुल. ठीक है? Totally erase. There is no sign of that thing anymore. And forgive is like your name on the board and you cross it out. It's still there, but you're forgiven. Okay? That's the difference, scholars, grammarian thing that it is. So in ta'fu wa tasfahu, and you ignore, overlook. Okay? Wa taghfiru, and you forgive. Meaning Allah does recognize कि कुछ चीजें ऐसी हैं you can totally forgive, pardon. But कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइन छोड़ जाती हैं इंसान के दिल पे. And you remember them. So maybe it's humanly or emotionally not possible for you to let go. But you have forgiven the other person. तो दोनों एस्पेक्ट्स ताफू और तगफिरू में कवर हो जाते हैं. अल्लाह ताला का भी हमारे साथ ऐसे ही रिलेशन है. कुछ चीजें अफू हैं, कुछ चीजें गफारा है. राइट? और वो तस्फाहू तो बेशुमार है. ठीक है? तो and if you pardon and if you overlook and if you forgive, yeah, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. It is simple, right? Then indeed Allah is all forgiving and all Rahim. इन दोनों इस पूरी आयत में कुछ और निकाल सकते हैं आप? कोई और कंस्ट्रक्ट, कोई और स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा? Condition and answer to the condition. Condition and answer to the condition, right? So conditional, ये वाली बात जो है, तो अल्लाह ताला कब गफूर और रहीम है? अगर आप गफूर और रहीम है. That's the condition. इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना. ट्रांसलेशन करते हैं इसकी पहले को. Thoughts? Indeed. Indeed, indeed, your money and your offspring or children are trial. Trial. Yeah, trial. ठीक है? Yeah. Good. So इसमें हमने मुब्तदा डिटेक्ट किया है सबसे पहले, right?
तो मुब्तदा अगर आपने सही डिटेक्ट किया है तो अम्वालुकुम व औलादुकुम इज द मुब्तदा। अगर आप इन नमा को सोच रहे हैं, बिकॉज दैट सीम्स लाइक अ हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट टू, राइट, व्हेन वी थिंक हर्फ ऑफ नसब इज आल्सो अ मुब्तदा। ठीक है, तो अगर आप इसको ट्रांसलेट करने पे जाएंगे, indeed whatever, that's what you know, ma, right? What or whatever. Mm. Indeed whatever is your wealth and your offspring, and then trial. अब ये फितना तो रफा है, हमें नजर आ रहा है, this is खबर, it's Mm. common, but amwalukum and auladukum are proper because of Mm. the attached pronoun, Yeah. right? So another way of looking at it is that innama is a concept of kafa and makfufa. Makfu. Yeah. Mm. Okay, so it would mean that inna is there for emphasis, but meme ma is stopping that emphasis, that to make anything nasab. Okay, and in that case, it will be translated as only. Oh yeah. Sorry. Okay, Kafa. so अब उसकी ट्रिक हमने ये देखी थी लास्ट टाइम के अमवालुकुम एंड औलादुकुम फितना को पहले ट्रांसलेट करें, योर वेल्थ एंड योर चिल्ड्रन आर अ ट्रायल. Then try to fit in where innama would come. You can say only your amwal and your aulad are trial. This would not make semantic sense because you have so many trials around you. It's not just these, right? Or you could say your amwal and your aulad are trial only. Okay? So that is giving you hope. Okay, they are just the trial. Whatever you're going through, that's a trial. So most grammarians इसको इस second form में translate करते हैं, okay, because it makes more semantic sense. Okay. Wallahu indahu ajrun azim. Sorry. Yeah. And your Lord. Only. यहाँ तो clearly अल्लाह लिखा हुआ है. Oh yeah. Allah. Yeah. Allah. Sorry. Word Allah. जी Has the greatest reward. जी, and Allah with him is the Yes, the great. great reward. Okay. In the home. Yeah, with him. जी बिल्कुल. It's Okay. it's an CA वाला इसमें exclusivity वाला भी होगा या नहीं? इसमें हो सकता है Special. बिल्कुल, क्योंकि indahu is C, But right? it is easy. And ajrun azim is B. So you can especially भी लगा सकते हैं आप, Special. exclusivity भी लगा सकते हैं. Of course, exclusivity makes sense as well because only Allah has the ajrun azim. Mm. Okay. fattaqullaha mastata'tum. ये tricky था थोड़ा सा. Let's see if you can recall. Otherwise, I'll help. What taqwa क्या होता है? What is taqwa? Conscious of. Being conscious of Allah. Conscious. Mm. What does it mean to be conscious of Allah? Mm. Aware of Allah. Loving and fear both. Loving and fear both. And जब हम कहते हैं ना conscious है किसी चीज की, अब imagine कीजिए, the way I think of it, इसके मेरे घर के हर कमरे में ना एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? Mm. और मैं कहीं भी जाऊं, वो कैमरा लगा हुआ है, और उस कैमरे को जो मॉनिटर करने का कंट्रोल सेंटर है ना, वो कहीं और है जिसका मुझे पता नहीं है. Somebody that I don't know is monitoring me. ठीक है? Imagine that scenario. Would there be any point in time in your home, wherever you are, that you will feel comfortable that you're when you're sitting and just spending time? Would you feel comfortable in that case? कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको पता है कैमरा आपको वॉच कर रहा है, right? So you will always have a taqwa of that camera. Somebody watching. That's consciousness. Yes, so wherever you are, wherever we go, whatever we do,
knowing that Allah is watching, because Allah has said in the Quran, Kiraman Katibin Ya'lamuna ma taf'alun. They're two noble writers and they know everything that you do. Do. Okay? That's taqwa, basically, effectively. God consciousness. Being conscious meaning we are aware that Allah is always and always and always watching. Okay? So, fattakullah. So, fattakullah का क्या मतलब बनेगा? Then be aware of Be aware, yeah. And be conscious of Allah. What type of word is fattaqu? Fail. Fail. फेल है और किस तरह की टोन है ये? commanding. Commanding tone है, right? It's a commanding tone. Fattaqullah. So be conscious of Allah. It's not like be conscious of Allah. So be conscious of Allah. Finger pointing towards us, right? Mastata'tum. ये tricky part था. इस्तिताअत क्या होती है उर्दू में? Capacity. Capacity. Capability. Capacity. ठीक है? Ability. और माँ हमें पता है whatever या what होता है, ठीक है? तो माँ whatever the capacity, ठीक है? Whatever your capacity is nasar tum. Whatever your capacity, be conscious of Allah, whatever your capacity. Of course, there are people who are not able to be conscious of Allah because of some disability, right? There's so many people. But whatever your capacity, as isko grammarians translate karte hain, as much as you can, and as much as you're able to. Okay? So be conscious of Allah, whatever your capacity or as much as you can, and then there are further commands. Wasma'u. Kya command hai ye? And listen. And listen. Wa'atiyu. What is the command? Obey. And obey. Wa'anfiqu. And spend. And spend. And spend. Khayran li anfusikum. For you. It is better for you yourselves. It's better for yourselves. Right? Now let's discuss wasma'u, wa'atiyu, and wa'anfiqu. Listen to what? Let's ponder upon that a little bit. What has been sent? Listen to Quran. Listen to what Prophet ﷺ said. Listen to anyone telling us something good. Listening is not constrained here. Allah Ta'ala ne ye nahi bola ki listen to something specific. It's open, right? Now, listen ka matlab hota hai, specifically in this context, listen is about listening to gain benefit for the akhirah. That's the listening. Otherwise, listening is also listening to music, listening to whatever. हर चीज है ना listening to. In this context में अजरुन अजीम के साथ जो कनेक्ट होनी है बात, उसको लिसन करने का पॉइंट है ये, राइट? जो हम पिछली आयत में पढ़ के आ रहे हैं. वो आती obey what? What you have listened. For Ajrun. Obey what you have listened. That's one perspective. Yes, totally possible. And what else? Allah says many times in the Quran. Yes, wa'atiullah wa'atiur rasul. Yeah. Obey Allah and obey the messenger. And obey your parents, right? Obey your parents as far as they are right and according to the principles of Allah and the Rasul, right? Obey them. So obey का भी scope खुला हुआ है. और हर चीज को connect किससे करना है हमने? fattaqullah. Allah is watching and keeping that in mind, checking what is our capacity to do things. Keeping that in mind, checking what are we listening to. Keeping that in mind, what are we obeying? Thereby keeping the consciousness in mind. वो अनफिकू, same with spending कैसी हो सकती है? How can we spend? Is it only money? Time. Your time. Ability. Your effort. Right? Your money. Usually, generally लोग money से associate कर देते हैं spending को सिर्फ.
Right? If you're going out of the way to raise funds for something that is charitable cause that can help people, you're spending your time and effort doing that. Right? If you're donating, if you have money, you can donate. You're spending. If you're telling people about Allah and His Rasul, you're spending. Right? All of those things are spent. It's better for yourselves. एक चीज मेरे उस्ताद ने मुझे बोली थी, एंड आई थिंक यू आल्सो नो ऑलरेडी, इट्स वेरी कॉमन, कि नॉलेज जो होती है ना आपकी, वो एक ऐसी चीज होती है जो स्पेंड करने से बढ़ती है. You spend knowledge, it will increase. It will firm up. You spend money, it will decrease. But हमारा दीन उल्टी बात करता. If you spend money in the right cause, it will increase. It will increase totally. और जो प्रॉब्लम है ना, जो हमारे दिलों में फियर होता है, वो हमारी बेसिकली ईमान की कमजोरी होती है. We are not really trusting that statement. वो हमारा फॉल्ट होता है. आगे बढ़ते हैं. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. मन क्या चीज होती है? मन. उर्दू वाला मन नहीं पूछ रहा, मेरा मन केक खाने को जा रहा है, वो वाला नहीं. अरबी का मन. What is मन? मौसूल. Sorry? इसम मौसूल. मौसूल होता है, बिल्कुल. और इसका मतलब क्या होता है? Whoever. Whoever yeah. और who, या दोनों होते हैं. और इसके बाद एक फेल आ रहा है which is युका. इट्स अ कॉम्प्लेक्स फेल. ठीक है. वका यकी, इसका जो पास्ट टेंस है वो वका है, और इसका प्रेजेंट टेंस यकी है. एंड ये उस यकी का एक पैसिव फॉर्म है. ठीक है. पैसिव फॉर्म. सो वका का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट और टू सेव. वका, he protected. Yaqi, he protects. Yuka, he was protected. He was saved. ठीक है. So whoever was saved. Saved from what? Greed. शुहा. Sure. Greediness. Greediness. और greediness को कैसे define करेंगे? What is greediness? I want to read Quran so much. I'm all so passionate about it. Am I greedy? Greedy negative उसमें. Greediness in what sense? Materialistic sense, दुनिया के अंदर indulge होने की sense में, right? So the way people get connected and fell in love with the world around them, and that becomes the priority for them, and ignoring the spiritual growth that they could potentially do, connection with Allah and the Quran and all of those things. So anything that takes you away from remembrance of Allah. Ya ayyuhallazina amanu, those who believe, la tulhikum amwalukum. Do not make your wealth, wala awladukum, and your children distract you from remembrance of Allah. La tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. From the remembrance of Allah. Anything that takes you away from remembrance of Allah or achieving this command, takes you away from being conscious of Allah, that could potentially be greediness. Right? So, अगर हम इस greediness को समझ जाए ना, तो हमारी सारी activities totally खुद ही streamline हो जाएंगी. It is not stopping us from buying a luxury car or a home or going on an outing trip. Nothing. It's not stopping from anything. It's just being conscious of Allah and being thankful what He has given you, and of course not going into an israf mode. I remember कि वो Virgin Media का founder था, he paid $250,000 just for 24 hours stay in the space. Okay? In a space tourism. And what do you achieve after that? Well, not sure. You could spend that money to help somebody. So इसराफ और नॉन इसराफ के अंदर फर्क है ना. तो उस ग्रीडीनेस की डेफिनेशन हमें समझनी चाहिए. वमन युक्का शुहा नफ्सिही.
Okay, whoever is protected, or whoever's nafs was protected from the shokha of his nafs, shokha nafsi. It's a greediness of the nafs of your soul. So Okay? Whoever is protected from it, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. so Those are are Those are the ones. They are the they Muflihun. अच्छा, इसमें ना एक बहुत ही आई मीन एक बड़ा यूनिक सा विजडम है, जो I recently learned from one of my ustads. There are two words in the Quran that are quite widely used to define success. One is fawz, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم, See, and the other is muflihun, falah. Those are the successful ones. And the difference is very unique. Fawz, jab use hota hai, fawz is like you are at a point A and you want to reach the point B. And to reach from point A to point B, you go through a lot of struggle. A lot of struggle. You fall 15 times, you get up and you go. Ultimately, you reach that point. The fact that you reach that point is fawz. Fawz is achieved after struggling along the way to reach a certain point. And once you reach that point, that scholars say it's definition of fawz. So when Allah says that is fawzul azim, meaning you have reached that state after a lot of struggle. And that is a great success to achieve it. For example, a small child offering 20 rakah sarawi, and while the adults are not, for example, for that child, it's a fawz. Doing that taraweeh after the struggle. Muflihun, falah, is beyond the fawz. Once you have achieved that success, whatever you get after it, that you permanently go and enjoy, that is the that is falah. So falah, आप इसको इस तरह देख लें, is fawz plus extras. So humul muflihun basically are those who have actually gone through the struggle, achieved the point, and now they are rewarded with something that they deserved. That's falah, muflihuns. Okay. जी फाद भाई सॉरी, ये जो जी इसका ये जो यू का जी पैसिव जी है कि whoever was saved, जी जी इसका दिस इज क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि ऊपर सब में कह रहे हैं अस्माऊ, अतियु, अनफिकू, जी 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 है ना? इसमें अब भी शायद ऐसे कह सकते हैं कि सेव, जिसने you अपने नफ्स को सेव किया, जी या मतलब जी जी इट्स अ गुड पॉइंट. देखें, ऊपर तो कमांड्स हैं. दीज आर थिंग्स यू मस्ट डू. These are commands, clearly. This is where you are given your free will to act. This is where your test lies, basically. ठीक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसकी अभी तक, कि you use passive when you don't, for few reasons. One, you don't want to expose the doer. Two, you want to broaden the scope of the topic. आप टॉपिक का स्कोप ब्रॉड करना चाहते हैं. सो नफ्स तो आपका है, उसको कंट्रोल भी आप करते हैं. अल्लाह ताला ने उस पर कंट्रोल दिया ना आपको. कुछ कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ इंटेंशनली नहीं करते, कुछ कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि बेसिकली दिस इज somewhat related to your own ways of operations, your own ways of using free will. Allah is not dictating you how you protect yourself from greediness, because that's where the trial lies. ठीक है, अगर ये भी कमांड होती तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं शायद वो हराम करार देते थे अपने लिए. फॉर एग्जाम्पल, my child wants to go to a theme park, and if it is a command that don't be greedy, then I would potentially be thinking all the time, oh, there are people who are hungry in the world, it's haram for me to go and take my child to a theme park.
So Allah has given us that free will here, जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इसकी, जिसकी वजह से इसको पैसिव बनाया गया, इसका स्कोप ब्रॉडन कर दिया गया है, बिकॉज दैट इज इन द ट्रायल फेज. बट ऊपर वाली जो बातें हैं, फत्तकू और वस्माउ व अतियु व अनफिकू, दे आर नॉट ऑप्शंस, दे आर मैंडेटरी. ग्रीडीनेस, अक्वायर करना और उस पर एक्ट करना हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है. दिस इज वेयर अल्लाह is trialing us. This is why I think it's passive. And wallahu alam, इंशाल्लाह तफासीर से हमें ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी. मुझे साथ में ये भी जी लगता है कि आई थिंक वही वाली बात शायद इस सेंस में कि do your effort by listening, listen and obey and जी spend, and then Allah will make it easy for you to control your nafs, or He जी will help you to make it जी. easy. मैंने एक बड़ा अच्छा उस दिन हमने एक क्लास में डिबेट भी की थी, और उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च की. एक बहुत अच्छा मुझे पर्सपेक्टिव मिला. इट्स लाइक एक एनालॉजी मैंने सीखी उसमें कि इमेजिन कीजिए कि 3 बच्चे हैं, और उन 3 बच्चों को आप एग्जैक्ट सेम लेगो बॉक्स दे दें, हर किसी के पास अपना एक, उनमें सब लेगो की ब्रिक्स हो सिर्फ, ठीक है, एंड यू आस्क देम टू कंस्ट्रक्ट समथिंग सेपरेटली. विल दे कम अप विद द सेम थिंग? इमेजिन करें वो अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं. आप देखिए Different. फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, but they come up with something that is totally different because of the way they interpret the Legos in their mind. कई स्कॉलर्स कुरान को ऐसा समझते हैं, एक आया है, उसको एक बंदा पढ़ता है, उससे वो एक इंटरप्रिटेशन निकालता है, दूसरी से वो दूसरा निकालता है, तीसरा तीसरी निकालता है. While we might think that, oh, this is creating fragmentation in our deen, but if you really go back to Prophet Sallam's time and companions' time, that is how the deen brought ease to their living. जो अल्लाह ताला जब कहता है ना, इन्ना दीना इन्नल्लाह इस्लाम, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम चूज किया है, और इस्लाम में आसानी है, मुश्किल नहीं है. हम उस दौर में पैदा हुए हैं कि जब शायद मुश्किलात बन गई हैं. दीन आसान है हमारा, इस्लाम इज नॉट डिफिकल्ट. तो इसी तरह जो जैसे भाभी आपने अपना ओपिनियन बताया, वो आपकी एक लर्निंग है, किसी ने कहीं से आपने पढ़ा होगा, मैंने अपना बताया. I mean, that's the beauty of Quran. It gives you perspectives. ठीक है, and then you can of course use your own इज्तिहाद कहते हैं, में अपने decisions आप ले सकते हैं, informed decisions based on that. इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसना. तुकरिदु पैसिव है, क्या है, कमांड है? अगर आप एक चीज नोट करें, अगर आप एक चीज नोट करें तो इधर गया मेरा पॉज पॉइंटर, काफ रा एंड दाद, कर्द, काफ रा एंड दाद, कर्द, दोनों सेम रूट लेटर्स से आते हैं ये अल्फाज, तुकरिदु एंड कर्द. ठीक है, तुकरिदु इज टू गिव अ लोन. ठीक है, इफ यू गिव अ लोन टू whom? Allah. Allah. I mean, it's weird. And what type of loan? Qard and hasana. Good Lord. A good loan. A good loan. कर्ज हसना आप किसी को देते हैं, do you expect a return? No. No, you just give it. ये जाओ यार, तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाए. You don't expect a return. So Allah is saying, give me कर्ज हसना. How do we give कर्ज हसना to Allah? Think about it. Just ponder upon this point. कैसे दें अल्लाह ताला को कर्ज हसना? हम देंगे कर्ज अल्लाह ताला को? What could be the possible way? I mean, when we offer salah,
Are we giving qarz hasana to Allah? No. When we read Quran, are we giving that? How we give qarz hasana? ये अनफिकू के साथ ही लिंक्ड है मेरा ख्याल में. Spending in जी बिल्कुल path of Allah. Spending your things. बिल्कुल. बट इसमें एक इंटेंशन का एलिमेंट है. इंटेंशन का एलिमेंट. वो कहते हैं ना, सेल्फलेसली हेल्प की उस बंदे ने उसकी. सेल्फलेस होना बिल्कुल, यानी फॉर नथिंग उसने उसकी हेल्प की. प्रॉफिट सल्लल्लाहु और उनके कंपेनियंस सिर्फ जन्नत के लिए वो मशक्कत करते थे, नथिंग एल्स. किसी की हेल्प करते थे तो कल को जाके ये नहीं कहते थे कि तुम्हारी मैंने हेल्प की थी, अब तुम्हारा टाइम है हेल्प करने का. ये वाली मेंटालिटी नहीं थी. सेल्फलेस थे वो लोग. हम लोग अनफॉर्चुनेटली सेल्फिश हैं. हमारे दौर में काफी लोग सेल्फिश हैं. तो ये कर्ज जो है ना अल्लाह ताला का, वो वाला कर्ज है जो कि कंपेनियंस दिया करते थे, जिसके रिटर्न में अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत प्रॉमिस की. Being selfless when helping somebody, I mean, we can't give qarz hasana to Allah. Absolutely not. This is Allah's way of saying it. Don't worry. Whatever you're doing selflessly, I'm keeping a record of it and I'll return it to you. That's Allah's way of saying it. Wa in tuqridullaha qardan hasana. So agar हमने ऐसा किया, what's the consequence of that? Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Yudha'if, to multiply. Increase. Yeah. To multiply, increase. Yudha'if lakum. Who, ये जो who लिखा हुआ है, ये किधर जा रहा है वापस? What is this who pointing back? Pronoun जो है, because pronoun always goes back. Deeds. Allah. Yudha'if who, I mean, Your deeds. The curse you. कर्ज. Curse. You've given the कर्ज, right? You've given the कर्ज. So जो आपने कर्ज दिया, आज आपने 100 पाउंड्स दिए या आपने कोई 5 घंटे की एफर्ट लगाई, Allah saying कि I will increase it, multiply it for you. But is Allah saying कि when I will multiply it for you? No. There is no discussion of when. It can be anywhere. There is no discussion of when. And the entire thinking here is trust Allah's plan. 3 words. Trust Allah's plan. If you spend your entire wealth and you get totally broke and nothing comes back to you in the path of Allah, like Hazrat Abu Bakr Siddiq did, like Umar did, many other companies did, they got totally broke by spending. But they never said, oh, Allah Ta'ala ne to multiply kiya hi. That thinking comes when we expect He will multiply here. Right? If we keep that thinking open, if it is not given me here, it is certainly going to be given back to me when I go back. युदाइफु लकुम. अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कब. अब वो अल्लाह की ताला की रजा है, वो जिसको कब दे दे. ठीक है. अल्लाह ताला कहता है यरज़ुकु मन तशा बिगैरि हिसाब, and I give risk to anyone I want, whatever I want, without accounting. गैरि हिसाब, no hisabs. So that's the mindset here. युदाइफु लकुम. Believing that Allah will return me my qarz hasana that I've given, multiplied. وَيَغْفِرْ لَكُمْ. And I think you and I need يَغْفِرْ لَكُمْ more than the يُضَاعِفُ لَكُمْ. I mean, if we look at our lives, Allah Ta'ala has given us this month of Ramadan, and how many people may have passed right before the month of Ramadan? You know? I mean, the way, if you think about it, I mean, this is what we need more than anything.
हम उम्रे पे भी एमओटी कराने जाते हैं ना, है ना, तो रिपेयर होके वापस आएंगे. Every time you go to Umrah or to Hajj, you come back fresh with your iman and taqwa and with the passion. I will now continue this and that. And then dunya starts to infect us again and again and again and again. Over time, we get infected more. And then we go back to Umrah again. And honestly, think about those people. हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग फिर भी चले जाते हैं. Think about those people. उनके लिए once in a lifetime journey होती है. बस. They go and they never get any other chance to go. हमारे लिए यग़फिर लकुम फिर भी आसान है, क्योंकि हम लोग बार बार शायद जा सकते हैं. ऐसे लोग जो जा ही नहीं सकते हैं, उनके ऊपर कितना टफ होगा ये. हम तो समझते हैं कि अच्छा, हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, फाइन, ना वीजा लेना है ना कुछ, 15 मिनट में वीजा लगता है, पैसे भी हैं, टिकट पकड़ते हैं, उम्रा करते हैं. तो ये यग़फिर लकुम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग more than the yudaifu lakum. If you get, basically the way I look at it, if you don't get yaghfir lakum from Allah, you will not get yudaifu lakum from Allah. जब अल्लाह ने आपको माफी नहीं किया तो वो इंक्रीज क्यों करेगा? Right? When he has not forgiven you, why would he give you more in the hereafter? Wallahu shakurun halim. Allah is very, very appreciative and very, very forbearing, forgiving. Alimul ghaibi wash-shahadati. आलिम कौन होता है? आलिम All knowing. knower. Alim knower. somebody who Mhm. knows, right? Somebody who knows. Alimul ghaibi, somebody who knows the unseen. See. Who knows the unseen. The knower of the unseen. And it's only Allah who's the knower of unseen. Even Prophet ﷺ, even Jibreel alayhi salam, they know part of the unseen but not the whole unseen. Allah knows the true unseen. Okay? Wash-shahadati. He's a knower of not just the unseen, but also the shahadati. What is shahadati? Witness. Seen, witnessed. Evidence. वो शाहिद होता है. Oh, sorry. शाहिद जाके शहादा देता है. Evidence. Evidence. He's not just knowing the unseen, he has the evidences. Evidence of what? Evidence of what? आप पीछे देखें क्या बात हुई है. इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसन. तुमने कितना कर्ज दिया अल्लाह ताला को. ठीक है. Did you do mastata'atum? Did you do wasma'u? Did you do wa'ati'u? Did you do anfiqu? Did you do fattaqullah? इन सब चीजों के एविडेंसेस ही है ना अल्लाह ताला के पास. Allah knows. He knows the ghaib and he knows the evidences. Al-Aziz al-Hakim. He is the almighty and all-wise. Al-Hakim. ठीक है. This surah, Surah Taghabun, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी की. और इसकी एक यूनिक बात बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने भी रिसेंटली लर्न किया. दिस सूरा, आप अंदाजा है, कुछ पता है आपको कि what is it a मक्की सूरा और a मदनी सूरा? Madani. Madani Surah. So मदनी सूरा. अब मुझे बताइए, just let's logically think about it. ईमान का प्रॉब्लम जो है, having an iman in the heart, was more iman missing in Makkah or in Medina? Medina. Madina. Makkah. Medina. मक्का में तो था ही नहीं बिल्कुल ना ईमान, है ना. जी. टोटली मिसिंग था. मदीना में तो बिल्कुल. फिर भी आ गया था, और उसमें फिर मुनाफिका था. वहां मुनाफिकून का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन ईमान की जो टोटल कमी है, वो तो मक्का में थी ना, अच्छा सही. हाँ जी, उस लिहाज से. है ना. लेकिन जी. ईमान के दायरे में लोग बहुत ही कम थे, हम्म. और मदीना में तो ज्यादा थे, लेकिन फिर वो निफाक डिस्ट्रैक्ट की होने वजह- लग गए. जी. निफाक आ गया वहां पे. ठीक है. अब ईमान की ये दिस सूरा इज ऑल अबाउट
the iman, yeah, and it is revealed subsection. in Medina. And scholars think, why would Allah reveal surah about iman in Medina? Why is it not a Makki surah when actually it is needed the most? क्योंकि ये ठीक है इसके लिए ना But कि आपके Islam, पास जी थोड़ा ईमान है, जी, आपने उसको बिल्ड अप करना, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी जी ये मक्का बिल्कुल। में तो ये था कि वो टोटली हम्म, ईमान नहीं है, तो आपने नहीं, बिलीफ लाने के लिए कि यू हैव टू बिलीव दिस। वीकनेस जी ऑफ ईमान जी मदीना में ज्यादा थी, दैट्स व्हाई वी सेड के मतलब वहां पे मुझे लगता है ज्यादा ट्रिकी था, जो जी जी मक्का वाले इस्लाम और ईमान वाला जी डिफरेंस जी जी। मुझे लगता अच्छा, मैंने जो लर्न किया ना, ये मेरा व्यू नहीं है, मैंने जो रिसेंटली लर्न किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस सूरा, मक्कन सूरास में भी बहुत ईमान की डिस्कशन है। ठीक है, वहां पे दीन की डिस्कशन है, ईमान की डिस्कशन है, प्रॉफिट को मानने की डिस्कशन है। स्कॉलर्स थिंक कि दिस सूरा बेसिकली समराइजेस ऑल द डिस्कशन ऑफ ईमान इन मक्का इनटू वन चैप्टर। ठीक है, ये एक चैप्टर है 2-3 पेज का, जिसमें मक्कन सूरा की सारी ईमान की डिस्कशन को समराइज कर दिया गया है बेसिकली। दैट्स वन व्यू दैट आई रिसेंटली केम टू नो। ठीक है, अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा एक्सीलरेटर दबाना है। ठीक है, एक्सीलेटर दबाना है, गियर चेंज करना है। अब मुझे बताइए कि क्या अटेम्प्ट की है इसको मेमोराइज करने की या नहीं की? सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना, फत्तकुल्ला पड़ा है अभी, झूठ तो बोल भी नहीं सकते। कैमरा इज ऑन। कैमरा इज ऑन। फातिह शुरू मैंने मैंने स्टार्ट में तो की थी, आई स्टार्ट किया था, मैंने हाँ, शुरू की कुछ 7 जी तक चार तो मैंने 5 मैंने पूरी की थी शायद। 7 मैंने वेरी ट्राई गुड। की। हाँ, अच्छा, मैंने आज सोचा हुआ था कि मैं आपको कहूंगा ये 5 आयात जो है ना, हम्म, ये नेक्स्ट क्लास में मेमोराइज होनी चाहिए। पक्का 5 इंशाल्लाह। जी। बिकॉज ये तो ये ये आसान है आपके लिए। अब ये बेस्ट सही है। टाइम है। अगर मैं अभी आपको पुश नहीं करूंगा ना और आप दूसरी सूरह पे चले जाएंगे, तो फिर ये रस्टी हो जाएगा मामला। हाँ जी, नहीं दैट फातिह मेरा और हिना का तो ये वो है, टारगेट है रमजान, वो सूरह तगाबुन। दैट्स अमेजिंग टारगेट। सो लेट्स गो वन। ये यकीन करें, कितनी आयत है इसकी यार, ये तो बहुत जी, ही छोटी सी विद 18। ना डिटेल्ड वो जो उसके लेसन हैं, नुमान अली का, उस्ताद नुमान अली। हाँ, वो अगर आप डीपर लुक सुने, दैट्स वेरी, जो मैंने आपको बातें की हैं बहुत सारी वो उधर उन्होंने फर्स्ट भी की है मेरे चैप्टर है, पास। हाँ, जी वो जी फर्स्ट बिल्कुल। चैप्टर है। आई लर्न हाँ, फ्रॉम देयर एज वेल। तो कितनी, 18 आयत है यहाँ। जी, और तो नेक्स्ट 20 क्लास एपिसोड्स में हैं। कोशिश करते हैं, ठीक है। जी ये 5 आयतें, आपका टारगेट ये है कि इस रमजान में इस पूरी सूरह को मेमोराइज करना है, और कम से कम एक सलाह के अंदर या तो एक रका में पढ़नी है या 2 रकात में पढ़नी है ब्रेक करके। जी ट्राई टू मेक अ टारगेट, गो अहेड, डू इट। अभी हो जाएगी आपको ये, 4 हफ्ते के बाद नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक रिसाइटेशन की ड्रिल करेंगे, फर्स्ट 5 आयत की, जैसी भी याद है, कच्ची याद है, पक्की याद है, वट एवर दैट इज, बट विल स्टार्ट टू पुट दैट एफर्ट इन। ठीक है, आर वी ऑन द सेम पेज? यस यस ये जेंट्स हजरात, आर वी ऑन द सेम पेज? जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल। खवातीन का तो हम टारगेट बड़ा तो क्लियर कट मुझे पता चल गया है, आप लोगों के चेहरे पर खामोशी है। खामोशी में ही है जो है अच्छा, ना, वो एग्रीमेंट है। आप मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं। सही है, वेरी गुड। तो 5 आयत इंशाल्लाह, ठीक है, द मोर द मैरियर। अब अब मैं आपको एक ऐसी सूरह पे ले जा रहा हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि ये सूरह आप लोग मोस्टली खुद करें। ठीक है, एंड दैट सूरह इज द सूरह अल-हदीद 57। द रीजन आई एम ब्रिंगिंग सूरह हदीद हियर, टुगेदर, या दे आर हाँ, दे आर वेरी सिमिलर, सिमिलर, या वेरी वेरी सिमिलर। ठीक है, अगर आप वो फॉलो करते हैं डीपर लुक, उसमें उस्ताद नुमान ने ये बात की हुई है। ठीक है, तो इवन डॉक्टर इसरार ने भी की हुई है जी बात जी ये। जी बिल्कुल। हम्म, तो दिस विल बी easier फॉर यू टू पिन डाउन टुगेदर विद हम्म, तगाबुन। ठीक है,
तो हम्म, अभी इस पॉइंट से अभी क्या कितना टाइम हो गया, हमारे पास 10 मिनट है। अब मैं 10 मिनट खामोश होने लगा हूं और 10 मिनट आप लोग बोलेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह ये सूरा आप लोग खुद करेंगे, जहां पे चैलेंजिंग चीजें हैं वहां पे मैंने इंडिकेट कर दिया हुआ है उनको, ठीक है? सो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज टू टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। बेशक आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें, एज एज कपल्स इसको डिस्कशन करें और सब करें, और देन यू come back and tell me in the next 5-6 minutes whatever you can, at least for the first ayah, ठीक है? Let's try to decode this, ठीक है? Independent करना है काम। हम्म। सब्बाहा लिल्लाहि, फेल हो गया ना। Praise, or glorifies, glorify, नहीं, but it is सब्बाह it's failed. past and past. This is past tense. हुआ 1 2 नहीं, पास्ट नहीं हो सकता ये। क्यों? Sense नहीं पता। नहीं, सेंस नहीं बन रही, पर अभी देखेंगे तो सब युसब्बिहु कि ये present है ना, जब इन्हें अभी फेल से युसब्बिहु होता है तो समथिंग हाइड कर रहा होता है, नहीं? क्या सॉरी से क्या अगेन युसब्बिहु वाले कहीं past नसरा सबाहा इसमें कुछ हाइड कर रहा ऐसे हो नहीं सकता। युसब्बिहु, वहाँ युसब्बिहु था आउटसाइड डूअर भी वो। तो हो सकता है ना इसमें। है। हाँ, माफिस समावाती वल अर्दी तो आउटसाइड डूअर है ना। Whatever is in the हाँ, skies and in the हाँ, earth. वो तो आउटसाइड आई डूअर हो थिंक गया। इट जी इज वही पास्ट वो फेल वही हुआ whatever 1 is 2 in the skies and the earth एंड इट्स 1 2 वो भी 1 glorifies 2 लेकिन कर whatever देते is हैं। in the प्रेस अल्लाह, Praised Allah, प्रेज प्रेस्ड अल्लाह। God glorifies. तो glorifies होना चाहिए था, हम कह रहे हैं continuous होना चाहिए, past pure past नहीं हो सकता। हाँ, समथिंग बिकॉज इट्स अ मिसिंग है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। पास्ट नहीं लग रहा ये आपको? लग रहा तो लग पास्ट है, रहा पर पास्ट लग होना पास नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, होना आप लोग अभी मिस्टेक क्या कर रहे हैं? अभी आप मिस्टेक ये कर रहे हैं, आप फ्रॉम सेंस मीनिंग बैकवर्ड्स जा रहे हैं। से आपको मीनिंग बाद में डिकोड करनी चाहिए, आपको पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद इसकी मीनिंग पे आएंगे। आई कैन टेल यू दिस इज पास्ट, वन ठीक टू है? इट्स वेरी इसको वेरी लेबल क्लियर, इट्स करते पास्ट। आप लोगों ने हाँ, जो इसको करा ना, गैस किया, बिल्कुल करेक्ट है वो, इट इज पास्ट। और तो उसके वन अंदर जो चीज हमें ध्यान में रखनी है, पास्ट सिर्फ पास्ट टेंस के लिए यूज नहीं होता अरबिक में, just to show something that happened in past. It's not always the case. Past tense permanence के लिए भी यूज होता है, something you can't change at all. That is also past tense is used for. Past tense is used for du'as as well. Past tense is used for many things, ठीक है? So अब ये एक अल्लाह ताला की हिकमत है कि सूरह तगाबुन युसब्बिहु से स्टार्ट होती है और ये सब्बाह से स्टार्ट होता है, राइट? अब इसके पीछे विजडम क्या है, ये हमें डीपर डाइव करके समझना पड़ेगा कि व्हाई प्रेजेंट देयर एंड पास्ट हियर। दिस इज अ लॉन्गर स्टडी, ठीक है? तो दिस इज सर्टनली पास्ट। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझे और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन पे आए, और इसको ऐसे देखें कि अल्लाह ताला ने एक फैक्ट बयान किया यहाँ पे जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई इट्स अ पास्ट, ठीक है? So one, I think we start labeling. one, So 1 2 1 2 ये हुआ ही है, हुआ 4 हुआ तो one, आउटसाइड डूअर हो सकता है फिर 1 2 फिर lillahi, लिल्लाही is 4 four, harf of jar which is 4. 4 Ma is is most likely mawsul, mausul. मौसूल Ma वल अर्दी fi सिला मौसूल। fi samawati is वल अर्थ, ardi is all of that is सिला मौसूल but fi is harf. सारा Samawati is जर harf of jar. And
Oh, yeah. हम्म, और अर्दी तो ये वही इदाफा तो वन टू इदाफा इदाफा कहाँ है? इदाफा इदाफा नहीं, इदाफा को तो नहीं, समावाती वल अर्दी इजाफा नहीं है वो नहीं वाह है बीच कनेक्टर है ना, एंड कनेक्टर connected। से समावाती को कह रही हूँ। सही फी तो हर्फ ऑफ जर आ तो ये गया ना। पूरा लेकिन हर्फ ऑफ जर है। अस जो है ना, अलिफ लाम जो है ना, वो तो होता ही नहीं है ना। अलिफ लाम अस्समावाती, दा का स्टेटस तो मुदाफिल नहीं होता। ये वाला पॉइंट मैं नहीं समझा अभी, क्या कह हाँ। रहे नहीं, ये इदाफा तो, ये तो हर्फ ऑफ जर फ्रेगमेंट है, हाँ नहीं, तो अगर वो इदाफा मुदाफिल कह रहे हैं तो ये नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता ना, वो लाइट फी लाइट और मुदाफ होना चाहिए, प्रॉपर मुदाफ मुदाफ लाइट एंड नो अल लाइट और नो वाला होना चाहिए, हाँ तो लेकिन नो लगेगा ना। तो वो फी लाइट एंड नो वाला ना, मुदाफ लेकिन क्या फी लाइट का इसम, तो नहीं है ना, क्या फी इसम है? फी तो फी हर्फ हर्फ है ना, ऑफ जर है। फी हर्फ हर्फ है ना, तो ये मुदाफ हर्फ लाइट कैसे हर्फ तो कभी नहीं मुदाफ होता ही नहीं। ये तो, हाँ ये तो नहीं भी है। नहीं मैं हाँ तो किसने कंफ्यूजन दी है, ये किसने कंफ्यूजन, ये हर्फ, मैंने सॉरी ये तो वही नहीं इट सकता ना, वाज मी ये तो वही नहीं आप लोगों ने परफेक्टली इसको हर्फ ऑफ यफुर जर मार्क किया है। हाँ सीकिंग फॉरगिवनेस प्लीज या यफुर वन ओके टू तस्फाहू तस्फाहू, इग्नोर, सही है ओवरलुक। सही ओके, और राइट। और कुछ इसमें? ये वन सब वन, और ये माफी समावाती ये टू, इसका नाइबुल फाइल हो गया ना। नाइबुल फाइल? नहीं नाइबुल फाइल तो नहीं, आपने आउटसाइड बड़ा सा outside वर्ड rule, जरूर फेंक उसको दिया है, क्या लेकिन होता है? फाइल, फाइल, फाइल नाइबुल फाइल क्यों नहीं है ये? वो तो इन प्लेस ऑफ होता है ना, नाइबुल फाइल क्यों नहीं है? व्हाट इज अ नाइबुल फाइल? नाइब इस कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को खलीफा फिक्स कर को। लेते हैं जी। नाइब खलीफा को कहते हैं। कहते तो खलीफा को ही है। फाइल को Bari, you have to do lots of tasfa today. That's what I know. नाइबुल वो जो फाइल, पैसिव बिल्कुल बिलाल भाई, एग्जैक्टली। नाइबुल फाइल इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम पैसिव वर्ल्ड। जो इंटरनल प्रोनाउन या आउटसाइड टर्न टू होता है उसको नाइबुल फाइल कहते हैं। यहाँ तो पैसिव ही कोई नहीं है ना, जी फिर फाइल होगा। तो आप क्या कह रहे थे माफ इस समा वाली के बारे में सब? कि मफूल आउटसाइड डूअर Where? Yeah, आउटसाइड, two. व्हाट इज आउटसाइड डूअर? नहीं फाइल, फाइल माफी नहीं, कहाँ से कहाँ समावाती, तक आउटसाइड डूअर है? माँ से लेके फिस समावाती वाला Ma अर्थ, fi तो आप samawati कह रहे हैं wal कि ये ard. सारा टू है, दैट्स व्हाट यू सेइंग, जी 1 2 राइट? तो ये टू 4 कि नहीं, ओवरराइड हो गया। टू खत्म हो 1 2 4 या 1 4 Mm. whatever in the earth and in the sky Correct. Praise. glorified Glorifies Allah. क्या लिखो? ग्लोरीफाइज, ग्लोरीफाइड लिखो है, glorified Glorified. Allah. ग्लोरीफाइड अल्लाह, whatever is in the skies and एंड the earth. ओके, क्या ग्लोरीफाई एक ही दफा किया था, नहीं अब नहीं करते? यही तो मसला था। इसके ऊपर मैंने जो आपको पॉइंट बताया, It past is tense is used for permanence too, glorifies, glorifies. हाँ. permanence। अब आप इसको ट्रांसलेट glorifies करेंगे, because it's a fact and continues to happen. It has been happening forever since the creation, and it will continue to happen until it is there, right? It's a fact. Okay, so whatever is in the skies and the earth glorifies Allah. आप देखिए माशाल्लाह कितना आसान हो गया आपके लिए, अभी कितनी क्विकली आपने इसको पिन किया है। ये आखिरी 1 मिनट में मुझे ये लास्ट 3
4 चीजें भी पिन कर दें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। हुआ वहुवल is अजीजुल connected. हकीम। हुआ is A. जी Al-Azizu अल-अज़ीज़ुल अल-हकीम Hakim is प्रॉपर रफा बी B. बी बी Why वन is B1 it मौसूफ सिफा? B1, B2. B1 नहीं, नहीं B1 B2 Why is it not मौसूफ सिफा? ये It दोनों can नेम be. से नेम अलग ही Okay. सिफात हैं, Yes, अल्लाह ताला It के नाम है। can. नेम्स नहीं होते। नेम्स नहीं सिफात करते। जो वहां भी आप सोच रही है ना कि मौसूफ सिफा भी हो सकते हैं। जी. इफ यू कैन सिमेंटिकली कंस्ट्रक्ट इन योर माइंड कि क्या अजीज जो है वो अल हकीम हो सकता है, हम्म, क्योंकि दोनों ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं। एक ओपिनियन ये है कि जब अल्लाह का नाम आएगा तब उसको मौसूफ बनाया जाएगा और बाकी सिफात बनाई जाएंगी, लेकिन जब अल्लाह ताला का नाम नहीं आएगा तो 2 सिफात को मौसूफ सिफा नहीं बनाया जाएगा। Sure, sure, sure. ओके, तो एंड ही sorry and he is the almighty, the all wise। ठीक है, हम्म, गुड। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे 5 आयत सूरह इंशाल्लाह, तगाबुन की शुरू में। सही है, Mhm. चलो जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।